Ladies and gentlemen, this is Pakistan's number one football show, Pressing Matters, brought to you by On the Mic. I am Ismail Farooq, and with me is Shahrukh Sohail, returning on the show after a very long time. Shahrukh is a sports management professional who has worked with the likes of footballpakistan.com and Leisure Leagues, to name just a few. And even outside of our usual football names, he has worked with Coke and all sorts of other brands to help with their sports and football consulting. More specifically, right now he is doing his sports management masters from the UK. और सबसे interesting चीज़ ये है कि for one of his courses he had to present a case study of sorts about an existing league or existing project in which they had to identify the issues and think about restructuring and reforming that entity. And the thing that he chose was the Pakistan Premier League. और उसकी हम बात करेंगे कि what's wrong with the Pakistan Premier League and what should be changed to get it back on track. Shahrukh bhai, thank you so much for coming back on the show. It's an absolute pleasure. Thank you so much, Ismail, for having me. It's good to be back, and I think you guys are doing a fantastic job in discussing Pakistani football and promoting Pakistani football, and it's always good to have a discussion on the topic. थैंक यू सो मच. वो जिस तरह आपने जैसे ही आपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट की थी ना अबाउट दिस प्रेजेंटेशन, आई फेल्ट लाइक दिस वाज अ डिस्कशन डेफिनेटली वर्थ हैविंग. तो शाहरुख भाई, लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू इट. शुरू तो करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से, ठीक है, बिकॉज दैट्स द वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट यू डू इन योर प्रेजेंटेशन. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड विद द पाकिस्तान प्रीमियर लीग एज इट इज राइट नाउ? Bilkul, I agree. That's a good point to start with. And I'll just add here, when we were doing this project, it was for a sports marketing course, and a lot of people were looking at hypothetical products. And I thought that it would be a good idea. It was a group project, and I thought it would be a good idea to start with the Pakistan Premier League. Obviously, there were certain limitations since it was a marketing project, but we took it as a product that did exist and we revamped it to what the global standard should be, and then obviously had a marketing campaign with it. There were some time limitations, which is why I could not go into a lot of detail with the presentation. Believe me, we had to really rush through it. We had the longest presentation, but a lot of information to uncover, and it really starts with identification of the problems. And I think that's an interesting word, problem identification, because when you look at the Pakistan Premier League, मसले ही मसले हैं. मतलब you don't know कि आप कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें. But if you touch on the bigger points, one, no commercial revenue at all of any sort. Secondly, if you look at it, no broadcast, and as far as a lot of people know and have seen, you've never actually witnessed the Pakistan Premier League on a television channel, or I don't honestly consider what a few entities were doing past. They just put up a camera and were streaming it online. That's not broadcast. Yeah. And then apart from that, it has a myriad of problems in its structure, the amount of games that the players play. It's a very short competition, and then it's not holistically spread out through Pakistan. And the teams itself are mostly departmental or institutional teams, which range from SSGC, KRL, and obviously some of them have had amazing services for Pakistani football over the last 70 years, because these are the entities that were employing these footballers. But it's time to walk into the 21st century, and it's very important to turn this into a product which can be marketed and then be relatable for fans. The biggest problem that the Pakistan Premier League has faced is that in its very core, it's impossible for a fan to relate to this, because at the end of the day, nobody really cares what happens between SAGC and WAPTA. Yeah. They can never be that relationship with the fans, right? So that's like the problem number one. और So you need to इसी पॉइंट को ज़रा बस मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई द ओनली क्लब्स और टीम्स जिनकी हैं कल्ट फैन फॉलोइंग वो हैं जिनका रीजन से ताल्लुक है. सो फॉर एग्जांपल अफगान FC चमन, मुस्लिम FC चमन, इनको जब आप देखते हैं, गवादर पोर्ट अथॉरिटी इवन फॉर एग्जांपल गवादर की अगर आप टीम लेते हैं, तो दीज आर टीम्स जिनके साथ एक रीजन अटैच्ड है और इसलिए उनकी ज़्यादा कल्ट फॉलोइंग. नो वन केयर्स वापडा के साथ क्या होता है, पेस्को लेस्को, मतलब इनका क्या आपकी कोई अटैचमेंट तो नहीं होगी इनके साथ. Exactly. Like at the same time, because you need to understand how a government department functions. We are all Pakistanis. मैं बाहर तो हूँ, but I've lived in Pakistan for the last 28 years. We know how government departments functions. This is at the end of the day, it's a tick box exercise. एक check उन्हें box करना है कि जी हमने CSR में ये team run कर दी, etc., etc.
लेकिन the sort of facilities that are provided to those footballers and they have no real incentive to develop, ये फोकस ही नहीं होता ना, मतलब एक क्लब का जब मकसद ही नहीं है एग्जिस्ट करना फुटबॉल को डेवलप करे तो उसमें प्लेयर्स क्या कर सकते हैं. So this being a overall structural problem, you also see that none of these clubs naturally, because they don't exist for football and they don't have professional managers outside of the on-pitch coaching staff, which means that they're never able to fulfill AFC licensing criteria as well, which is one of the biggest hurdles that the Pakistan Premier League has never been able to overcome. So when you put all of this situation together, it means that you need to have a flip side of how you need to move this around. And the Pakistan Premier League is the top tier in Pakistan's football pyramid. It means that if you restructure this well, the teams already have a slot for the AFC Cup, but that's like the lowest slot you can get, which you get to play a playoff for the pre-qualifiers, and then you go from there. If you restructure this properly, you are able to get uh, AFC licensing criteria sorted. It ultimately also means that Pakistan will have more representation, more slots, and the ultimate vision should be to get to the AFC Champions League. But because our model is inherently flawed, and I'm using this word because there is no way that this system can get you anywhere. What Yeah. it has achieved in the last 70 years, it has, but it's high time you change it. And the government has already given a winding up order for all the departmental teams, which means that there's going to be a gap in any situation. So this is like the perfect अच्छा, opportunity that you. गैप की अगर हम बात करें, वो मुझे सो मेरा भी ये दिमाग में सवाल आ रहा था कि यार डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं. पहले तो फॉर पीपल हु डोंट नो, इमरान खान एंड द गवर्नमेंट हैव ऑर्डर्ड, क्रिकेट में तो ऑलरेडी हो चुका है, डिपार्टमेंट टीम्स जो हैं वो जा चुकी हैं. अब रीजन क्रिकेट में रीजनल टीम्स आ गई हैं, फुटबॉल के अंदर द स्पेस इज़ ओपन, देखते हैं क्या होता है. बट शाहरुख भाई, बस इस तरह क्यों नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल वापडा है, वापडा अपना नाम कर देंगे वापडा एफसी, डिपार्टमेंट के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया पीछे से, लेकिन वही प्लेयर हैं और वही पैसे मिल रहे हैं पीछे से वापडा से ही, तो वापडा एफसी बन गए. तो सीन तो वही है, मतलब ऑल्दो इट हैज़ टेक्निकली बिकम अ क्लब, बट जो आपकी शुरू में बात थी कि एसोसिएशन और बैडली रन एंड एवरीथिंग, अगर मैनेजमेंट भी सेम है पीछे वाली और वापडा का नाम ही है आगे, बस एफसी लगा दिए, तो हाउ विल थिंग्स चेंज, व्हाट हाउ कैन वी मेक श्योर कि ये चीज़ ना हो जो मैंने अभी आपको बताई है. देखिए, आपने इसका आधा जवाब तो खुद दे दिया ना, इन द सेंस कि जब वो मैनेजमेंट और वो सारा कुछ वही है तो नाम चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वही मैं बोल रहा हूँ, तो फिर एंड कुछ इसको सालों फिर पहले ही, अब क्या कुछ चेंज तो नहीं हो सकता, डिपार्टमेंट अगर चले भी जाएं बस वो एफसी लगा देंगे, आगे सेम चीज़ें चल रही होंगी. बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी हो चुका है एक दफा. कुछ साल पहले 2015-14 में जब डिफरेंट एक regime चल रही थी, तो उन लोगों ने ऐसी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया को मीट करने की एक अटेम्प्ट में इन सारे क्लब्स की लीगल एंटिटी चेंज करने की कोशिश की थी. वापडा के आगे वापडा एफसी लगाने से वो फुटबॉल क्लब नहीं बन जाता, नाम फुटबॉल क्लब हो जाता है. लेकिन यही यही तो हमें चीज टैकल करनी है ना, इन सबको फेज आउट करना है. वी डोंट वांट वापडा टू ऑपरेट ए फुटबॉल क्लब इन द पाकिस्तान प्रीमियर लीग एनीमोर. वो अपने तौर तरीके में एक टीम ऑपरेट करते हैं, वो खेलती है, दैट्स फाइन, बट आप टॉप टीयर में नहीं कर सकते. आपको रिवैम्प करना है. एज आई सेड, इनहेरेंटली जब फैंस का इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो सकता, एंड फुटबॉल का जो लाइफ ब्लड है वो फैंस हैं. अगर फैंस नहीं होंगे फुटबॉल नहीं चल सकता एट ऑल. और जब फैंस देखना ही नहीं चाहते, मतलब आप रोनाल्डिनियो को भी खिला लें वापडा में, तो आप शायद रोनाल्डिनियो की वजह से देख लें, आपका वापडा के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता. एंड पिछले कुछ महीनों में जो मैंने भी स्टडी किया है डिटेल में जाकर, और जो मैंने विटनेस किया है दुनिया में, खासतौर में यूके इज द बर्थ प्लेस ऑफ फुटबॉल. The attachment people have with their community football clubs is unprecedented. हम्म. I was at a Leyton Orient game, which is League Two, and मेरे साथ एक बाबा बैठा हुआ था 50-55 साल का, and he had been a Leyton Orient supporter for 45 years, जो हर हफ्ते एक दूसरे शहर से, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया, वो मैच देखने आता था, सीजन टिकट होल्डर था. हम्म. ये एसोसिएशन सिर्फ एक कम्युनिटी क्लब के साथ बन सकती है अगर वो किसी कम्युनिटी लाहौर लाहौर के अंदर उन जगहों पे किसी पे बेस्ड हो, ताकि वो एक फैन इमोशन हम्म. या एक फैन कनेक्शन बन सके. और उसको सॉल्व करने के लिए सारे डिपार्टमेंटल टीम्स को निकालना पड़ेगा, ये फेज आउट करना पड़ेगा. और जब आप इनको निकालते हैं तो गैप आ जाता है. लेट से जो मैंने भी प्रेजेंटेशन में, ये जो मैंने आइडिया में प्रपोज किया, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन आवर डिस्कशन, इज दैट यू टेक
what existing clubs you have. Let's say you take Awan FC, Muslim FC, Karachi United, Huma FC, who are playing in the Pakistan Premier League, courtesy of their last positions. You take that, you take those clubs, you keep them in the Pakistan Premier League, but the remaining slots that you have for the departmental teams, you change that around. You open up those 6 slots, and you make it a 10-team league initially with an ambition. Okay, obviously, with time you increase those slots, but then you look at opportunities to get private owners on board. Reason being, even with Afghan FC, Muslim FC, maybe apart from Karachi United, all the other 3 clubs are not very professionally run, Yeah. right? And you've been involved with the Karachi United setup, you know that. Getting AFC licensing criteria is easy but also difficult at the same time. It's a checklist which requires that you have certain management positions, certain coaching requirements. It's an entire checkbox checklist. But if you do not have people that understand that, Pakistani football, a lot of people that are involved, people can't make a presentation, let alone, develop a criteria, how we meet that criteria. But very importantly, meeting that criteria would also require money. It's not that Yeah. if you have 200, 300,000 Pakistani rupees, you'll be able to meet that criteria, because it requires employing a lot of individuals. And then in the longer run, when your vision is to get to the AFC Champions League, it means that there needs to be a substantial amount of investment in these clubs, but it's the operator or the league's job to make that ecosystem sustainable. So one way I propose that you take these slots and you bring in private owners, right? And first thought is कि भाई ये franchise league जैसी चीज तो नहीं हो जाएगी. I am Yes, that inherently is a against a question. Yeah. franchise league because private ownership and franchise league are two separate things, right? And I'll go into detail how that. Football globally is structured with private ownership. If you look at what's happening around the world, in more or less every country, there are clubs. Those clubs are either owned by private individuals, sometimes they're directly owned by fans, but they are private entities, right? आई थिंक Even एक some of एग्जांपल the रशिया का है, सोवियत यूनियन का, जो कि पहले स्टेट ओन्ड होते थे क्योंकि उधर प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, और आई थिंक उन्होंने भी ट्रांजिशन अवे कर दिए थे, लोकोमोटिव वॉस्को और इस तरह के जो सारे क्लाब्स थे, दे वर बिल्कुल यूज टू बी बिल्कुल स्टेट रन बट नाउ देर लोकोमोटिव प्राइवेट. मॉस्को क्या है? वही बिल्कुल लोकोमोटिव वाज इट लोकोमोटिव मॉस्को रेलवे. क्या है? मॉस्को रेलवेज है. या And then you take up CSK Moscow, that's Moscow Army. So they have a synthesis in being government owned, but they transitioned to that या because they realized we need to exist in the modern world. And obviously they have a different footballing culture. तो अब बड़ा मुश्किल है कि किसी रशिया जैसे कंट्री का पाकिस्तान से एग्जांपल लिया जाए. But again, franchise league only present in 3 countries out of possible 211 members. उसमें भी दो दो तो आप उठा लें, एक ऑस्ट्रेलिया और एक यूएस उठा लें, नॉट कंपेरेबल मार्केट्स टू पाकिस्तान इन एनी सेंस. इंडिया है in terms of maybe its certain psychographics, not overall demographics. But ISL का बात तो बहुत लोग करते हैं, but nobody actually tries to dive into the ISL model. कि ISL में इस वक्त हो क्या रहा है, and I'll touch on that as we go along. It's not to complete what we're doing with the Pakistan Premier League in this situation. You take that, you get private owners on board, but what you start with is that you need to make the Pakistan Premier League a separate legal entity, right? It's owned by the Pakistan Football Federation, but it means that it has its own CEO. It's registered as a separate company, and all the 10 teams have a stake in that league. They are shareholders. So whenever you have relegation promotion, that shareholding changes, but you will still have that ownership model there. So maybe for legal purposes, you have 51% ownership with the PFF, the remaining with the clubs. But when it comes to revenue, you would give 80% or 80 revenue or profit, whatever you see fit. You give 80% of that to the clubs. 20% goes to the Pakistan Football Federation. But because you want to make the ecosystem sustainable, and this is not about generating money in the short or medium term, it's a long stretch before it becomes a entity that's paying back Pakistan Football Federation. So even that 20% off, you can waive it every year and just give it back to all the clubs so that the ecosystem is sustainable. If people keep on investing, the biggest problem with the franchise league is that if you keep on investing in a market like Pakistan, which is not big, you keep on investing 5 6 years down the lane, when you realize that the ecosystem is not sustainable and you will indefinitely need to keep burning money just to stay afloat or maintain your operations, you will get investor fatigue.
या सो Yeah, go वेरी ahead. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके दो सवाल उठते हैं। एक सवाल ये है कि आपने क्योंकि बात की कि फ्रेंचाइज लीग से जो लिंक्ड आपने बात की कि वो इन्वेस्ट करते जाएं और देन यू हैव टू बर्न मनी 5-6 years डाउन द लाइन, यू रियलाइज कि दिस इज़ नॉट प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल इन एनी वे। तो पहला तो सवाल ये है कि इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे फुटबॉल इकोसिस्टम डेवलप नहीं किया गया कभी, how does one, or how would in this scenario the PFF go about gaining investor confidence or bringing investors in to buy these clubs? वो प्रोसेस किस तरह होगा? और दूसरा जो क्वेश्चन ये है विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल वन, एंड फॉर पीपल हु डोंट नो, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बात शाहरुख भाई ने की है, दिस इज समथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। FA डज नॉट रन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, वो उन्होंने दी हुई है एक और उसको ऑर्गेनाइजेशन को करती है। ला लीगा डज इज़ नॉट रन बाय द स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन, उन्होंने उसको आउटसोर्स कर दिया हुआ है। तो दिस इज नॉर्मल। बट शाहरुख भाई, दूसरा सवाल ये है कि शेयर होल्डर स्ट्रैटेजी ये स्पेसिफिक फॉर 51-49 से क्या होता है? सो जस्ट दीज टू क्वेश्चंस। ओके, तो दो दो आपके सवाल है। मैं पहले शेयर होल्डिंग वाला एड्रेस कर लेता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आई वुड आल्सो नॉट यूज द वर्ड आउटसोर्स, क्योंकि आउटसोर्स मींस दैट यू गिव रिस्पांसिबिलिटी टू समवन एल्स इन इट्स एंटायरिटी. The league ownership is still with the PSF. It's just that day-to-day या operations when आई they have अंडरस्टैंड, no say, they just sit on the board and they let सब्सिडियरी it run. सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। 51, हाँ, सब्सिडरी हो जाती है just so that they can make independent या decisions that are beneficial for. 51% का मतलब है कि the majority shareholding or the decision making power ultimately is with the PFF, so that they can take control of a situation where it's needed to be. नहीं, बट व्हाई डू Because द क्लब्स Pakistan में the नीड football ओनरशिप structure एट ऑल? व्हाई डू क्लब 49 क्यों नहीं चाहिए उनकी? व्हाई नॉट 100% फॉर द PFF? reason being that when you have a legal entity, the clubs need to have shareholding so that they're part of that system. They can sit on the board of the league. तो जो एक शेयर होल्डिंग एक कंपनी की होती है उसमें डायरेक्टर्स होते हैं. हम्म। तो लेट्स से कि XYZ नंबर पे आप दो डायरेक्टर्स कर सकते हैं. PFF 51% अपनी शेयर होल्डिंग में एक डायरेक्टर दो डायरेक्टर वो उनकी मर्जी है जो वो बैठा सकते हैं. बट द रेस्ट 49% is going to be divided equally into the clubs, which means 4.9% roughly with each of them. And they will nominate one person that will sit on the board of the league. तो वो जब कोई कलेक्टिव डिसीजन होगा वो सारे वोट करेंगे. अब PFF के पास बिकॉज 51% है तो दे कैन ओवर रूल दैट डिसीजन. या अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो फुटबॉलिंग नेचर के लेना है, राइट, यू डोंट वांट टू गिव अ कंट्रोल कि फुटबॉल की डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली अगर कोई चीज बेनिफिशियल है वो क्लब्स ना मान रहे हो. या आई तो अंडरस्टैंड। इनिशियली क्योंकि हमारा इकोसिस्टम इतना डेवलप नहीं है तो उसकी शेयर होल्डिंग इस तरह डिवाइड होती है और लीगली you need people to sit on the board and that's why you give them shareholding. But ये shareholding जिस तरह अगर relegate होंगे तीन क्लब्स उनकी shareholding खत्म हो जाएगी. जो तीन ऊपर आएंगे they will sit on the board वो and they ट्रांसफर will, हो जाएगा या? all of them will be able to make collective decisions for the league. That's the purpose of it. शेयर होल्डिंग से जो सेपरेट चीज है वो उनकी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा होगी बिकॉज PFF को पैसा नहीं चाहिए. या ये नहीं चाहिए होना एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म इसमें से पैसा निकालने की. वी वांट टू गिव ऑल दैट मनी बैक टू द क्लब्स. अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हैं फ्रेंचाइज लीग की या वो जो इकोसिस्टम की है उसमें देखें. फ्रेंचाइज लीग अभी अगर हम डिटेल में ना जाए सिर्फ इनहेरेंटली बताएं, फ्रेंचाइज में दो से तीन चीजें होती हैं जो फुटबॉल के लिए नहीं चल सकती. वन, यू नीड टू पे फ्रेंचाइज फीस. जो लफ्ज ही वहां से निकल है फ्रेंचाइज फीस का मतलब ये है कि आपके पास ओनरशिप नहीं है अपनी टीम की. ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे अगर 10 साल की भी फ्रेंचाइज डील चल रही है यू आर पेइंग, लेट्स से नॉर्मली तो यहाँ पे बात होती है मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर. एंड 10 साल बाद भी अनलेस देयर इज अ लीगल डील इन राइट्स आर परपेचुइटी स्टिल दैट. विद द फेडरेशन और यस, who the organization. yes, which means कि at the end of the day you as a league operator are in profit from day one. You can never have a loss in a Yeah. franchise league model क्योंकि पैसे तो आपको दिए जाते हैं. अब मसला ये है कि भाई आप अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट टू एग्जिस्ट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई आपकी हर तरीके से आपकी बजट टाइट होना शुरू हो जाएगा. इट्स अननेसेसरी एक्सपेंस, राइट. अगर मैं आपको लेट से 1 मिलियन या 1.5 मिलियन डॉलर्स दे रहा हूँ हर साल एग्जिस्ट करने के लिए तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं से तो पैसे काटूंगा ना. मेरा तो बजट शुरू ही 1.5 से होता है. तो यू डोंट नीड दैट इन फुटबॉल. It's honestly, I don't want to use the word stupid, but why do you want this money, नहीं right? नहीं, Just so that you can fill your own. या आई अंडरस्टैंड। उसके अंदर सवाल जो मेरा था वो ये था कि हाउ इस मॉडल के अंदर हाउ डज द PFF गो अबाउट ब्रिंगिंग इन इन्वेस्टर मैं आता हूँ, कॉन्फिडेंस? मैं आ या रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, right? मैं उस पे फुल सर्कल कंप्लीट करता हूँ. You start with this. So one, there is no franchise fees, which means it's a lot.
easier to stomach this investment. Second is that you make the league open relegation and promotion, which is different from what the franchise model is. It's a closed system, right? So it's very easy to operate. अच्छा अब जहाँ पे बात आती है ना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की, सबसे पहले when you lower the price and you talk about football, it is very easy to convince an investor to take control of the team because they don't have to pay you unnecessary amounts of money every year. जब आप एक लीग स्ट्रक्चर करते हैं, obviously they you explain how this league is the top tier of Pakistan, how what the vision is to develop football to ultimately take this league where its members are at the AFC Champions League criteria. And सबसे important बात, I've had these conversations with investors who sit across, and when you tell them कि यार we don't want your money, we want you to take ownership of teams, we want you to invest into the ecosystem. अब यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट चाहिए है आपको पाकिस्तानी फुटबॉल को चेंज करने के लिए, बट आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करा रहे हैं? अगर आप उनसे कह रहे हैं कि भाई हमें साल का एक चेक साइन करके दे दें और Hmm. उसके बाद मतलब वो पैसे हमारे पास आ जाएंगे, नॉट सस्टेनेबल. बट मैं जो मॉडल में प्रपोज कर रहा हूँ ये है कि दे गेट ए टीम, लेट्स से कि लाहौर की टीम में 6 स्लॉट्स उठाए हैं टू ईज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. आप उसमें से 6 टीमें जो है पीएसएल की जो एग्जिस्टिंग टीम्स है उनकी सिटीज पे कर लेते हैं, बिकॉज लॉट इजियर, पीपल हैव सीन कि भाई मुल्तान की टीम है, Hmm. लाहौर की टीम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब उन कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ सजेशन फॉर बेस प्राइस कि $300,000, which is not a lot of money. आप वन ऑफ प्राइस देंगे एंड यू विल गेट दिस टीम. इफ देयर मोर देन वन इन्वेस्टर्स, तो एक ऑप्शन भी हो सकता है टू डिटरमिन द प्राइस बिडर. बट उसका क्राइटेरिया इज नॉट सोनली मनी. यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल क्राइटेरिया इन प्लेस टू सी कि इन लोगों ने फुटबॉल में पहले क्या किया है, ये स्पोर्ट्स में पहले क्या किया इनका है, प्लान क्या एंड डू वाला दे है? इट्स लाइक हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस. the plan, can do they have the appetite to develop. And honestly speaking, I don't want to take names, but I know at least 4 to 5 entities that will take a team and set up shop tomorrow if you give them the right idea. So masla nahi hai Hmm. investors ka if you give them the right model and something that they want to be a part of. अच्छा आप उनसे कहते हैं 300,000 आपने दे दी, you're part of the Pakistan Premier League now and whatever team you've taken. We want you to invest. We don't want you to give us check after check each year. आपका एक certain criteria जो आपने meet करना है. Starting with the first one, कि from day one that you take ownership of the team. When you are fielding the team, your AFC Cup criteria licensing का, there are two of them. AFC Cup का immediately meet होना चाहिए, right? It's easier than the Champions League, but within 5 years you are contractually obliged to meet that criteria for the AFC Champions League. ये आप उनसे apart from the money that you've taken them, ये contractual agreement में डाल ये दीजिए. सिर्फ 6 Second टीम्स के thing is लिए है या फिर वो 4 क्लब्स के लिए भी है? क्योंकि उनके लिए तो बड़ा मुश्किल ये होगा सिर्फ अगर. 6 टीम्स के लिए है. ओके. 6 टीम्स के लिए तो कॉन्ट्रैक्चुअल है. 4 टीम्स को आप ये कहते हैं कि भाई देखें, इफ यू मीट द क्राइटेरिया फॉर द एएफसी कप यू विल बी एबल टू फील्ड द टीम. इफ यू डोंट, then we are sorry, we will have to phase you out as well, Sansad. Because देखो, if all the clubs do not meet the criteria, then Hmm. there's no point in having them. बट वंस यू क्रिएट एन इकोसिस्टम, अब मैं उसमें भी आगे जाके आपको बताता हूँ कि उन बाकी 4 क्लब्स को क्या फैसिलिटेशन मिल सकती है इस सारी सिचुएशन Hmm. के अंदर, राइट? अच्छा आगे हम जब जाते हैं तो देन यू आल्सो टेल देम कि व्हेनेवर वी हैव ए कंपटीशन दैट इज पीएफएफ सैंक्शन, मतलब आपकी यूथ चैंपियनशिप्स, वुमेन्स टीम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, you will be obliged to field a team in that. Very straightforward clause. Third thing, this is where it gets interesting. They will build a residential academy based on AFC Star 1 criteria for academies within the next 3 years. तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट्स इनटू द इकोसिस्टम कि भाई आपने एक एकेडमी बिल्ड करनी है, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द एकेडमी. ठीक है. द लास्ट इज, दिस इज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, is that they need to build a minimum 5,000 capacity stadium within 5 years. That meets AFC criteria. In सारी चीजों में you've asked them to spend money and you've asked them to invest money. It's probably a lot less than what they would invest in a franchise league. Yes, but But they the key own this. thing here, Assets उनके हैं. They they get own this. everything. Exactly. Now, when you look at all of this, especially when you look at the stadium, if you want to make the ecosystem sustainable, the clubs needs to own the infrastructure. Reason being that an infrastructure asset like a stadium is represented in the balance sheet, and balance sheet में भी आपके assets में जाएगा. तो जब let's say कि मैंने 300,000 की खरीदी थी, उसके बाद I've paid nothing, I've just invested 10-15 years later when this team is worth 10 times more,
I will have all of those assets together bundled if I want to ever sell the team. Yeah. Naturally, you don't want people selling teams, but at the end of the day, this is how the business model is Yeah. sustainable. One, because there are no unnecessary operating costs. Isme, I have suggested that you have a salary cap because there is going to be disparity between the financial power of the ownerships. So if you keep a salary cap at let's say $650,000 a year, which means that nobody should spend more than this or shouldn't be allowed to spend more than this, so that just it remains to a certain level, it remains competitive. अच्छा. I've also suggested a lower cap. या सॉरी, इसके सैलरी कैप की मैंने डिटेल में आपसे बात करनी है बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मच लाइक द फ्रेंचाइजी बिकॉज नॉट you don't see it practiced all over the world. Again, वो ऑस्ट्रेलिया आई थिंक हैज़ अ सैलरी कैप और कम ममालिक हैं जिनमें सैलरी कैप होता है. बट बिफोर दैट आपने रेलीगेशन और प्रमोशन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी. उसके अंदर एक सवाल ये है कि रेलीगेशन प्रमोशन, ठीक है, रेलीगेशन की तो समझ आ गई ना, जो बॉटम 2 हो गई उनको निकाल देंगे फॉर एग्जांपल. ऊपर आने वाले क्लब्स कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, और वो किस तरह की पोजीशन, उनको किस तरह हम ऐसी पोजीशन में लग सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बलोच एफसी क्वेटा अगर अपनी जो भी हमारी सेकंड डिवीज़न है वहाँ से उठ के आई, तो इट इज़ इन अ पोजीशन टू मीट द क्लब लाइसेंसिंग क्राइटेरिया वॉट एवर, इफ़ इट वर टू क्वालिफाई फॉर द एफसी कप और वट एवर. बिल्कुल. Actually, that's a very good question as well. So, one with the relegation, I've also suggested because we are asking people to invest a certain amount of money, they will get immunity for 2 seasons. That these 6 teams won't be relegated for 2 seasons, but after that, it's normal relegation, right? What we want and what a franchise league cannot do is open up the football pyramid. The entire purpose of this is to make the top tier, but also make this as an aspiration as to what all the clubs should be aiming for. आपकी सेकंड डिवीजन ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करती है, उसमें काफी सारे क्लब्स भी खेलते हैं. You make that league better, you get people to start meeting a certain amount of criteria, but it becomes very easy to relegation for relegation promotion. Pakistan, mein, considering how big our country is, I would only suggest that at national level you have two top tier leagues. Third, May, what you could do is what India has also done because of their geography. They have made qualifiers, right? Qualifiers में दो procedure हो सकते हैं. यहाँ पे तो if you get your MAs, which is your provincial associations, to start holding provincial leagues, you assist them with that, and then you ultimately filter that down to geography, to cities and districts and everything. या तो आप वहां से प्रमोशन लेके आ सकते हैं क्लब की, स्लोली स्लोली स्लोली. दैट्स द अल्टीमेट गोल. मे बी इनिशियली बिकॉज नॉट एवरी क्लब इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कैन मीट द Hmm. क्राइटेरिया. आप एक थर्ड डिवीजन बनाएंगे विच विल बी सॉर्ट ऑफ, इट वोंट बी अ लीग इन इट्स इंटायरिटी कि वो पूरी सीजन चल रही है, उसमें आप क्वालिफायर्स खिलाएंगे. लेट्स सी के you invite every club in the country that wants to take part, provided they meet the criteria. Let's just Islamabad and Puput example. ले लेते हैं. Hmm. For now, let's just say that you tell them कि you are, if you meet the criteria, you are invited to apply for the third round of qualifiers, right? And those qualifiers are held throughout the country. जितने आपके पास potentially इकट्ठे होते हैं, उनको सबको आप qualifiers खिला के, then you give them promotion to the second division. This is only because, and this is probably a short-term fix because not every club will be able to meet the criteria. But देखें, only if you get the ecosystem going. जब बॉल चलनी शुरू होगी तो people will understand कि what is लाइसेंसिंग क्राइटेरिया, हमने क्या करना है, एंड फिर आगे जो हम बात करते हैं ना, व्हाई पीपल वांट टू गो टू दिस. पाकिस्तान प्रीमियर लीग is the top tier product, and because there is a sizable audience that is present in Pakistan. In my work, I've worked with Nielsen, and the audience we estimated in Pakistan is roughly between 35 to 40 million for football, which is either watching, interacting, or doing something. That's a large audience. It needs a product, which means that there is a market opportunity here as well. आपने अगला काम जो करना है ना, वो ये है कि आपको पाकिस्तान प्रीमियर लीग के 3 तरीके होते हैं रेवेन्यू के. देयर इज ब्रॉडकास्ट, देयर इज कमर्शियल, देयर इज मैच डे. Let's start with broadcast. So many estimations ली हैं, वो सारी based on what the PSL is doing, based on my interactions with the community, और जो पहले मैंने फुटबॉल की sponsorships बेचने में टीम्स के साथ काम किया हुआ है. तो अगर आपकी ओवरऑल उसमें देखें, if you are getting what the PSL is roughly getting is about $12 million a year for their broadcast, अगर आप उसको almost $1.2 million, and that's a sizable amount of money that can come in, and it's not unheard of, especially जब आप एक पूरा
competition offer कर रहे हैं that runs throughout the season, and I believe, if I'm not wrong in my calculation, it's about 81 matches that are held. हम्म, और आपको बहुत जरूरी है कि मैचेस होम एंड अवे करने हैं, so that communities are able to take part. आप शायद सेंट्रलाइज करें इन द सेंस कि एक से ज्यादा स्टेडियम एक टीम शेयर करी हो, मे बी अपार्ट फ्रॉम कराची यूनाइटेड नोबडी रियली हैज देयर ओन स्टेडियम, बट इनिशियली वो सारे, अगर मल्टीपल टीम्स हैं तो एक वेन्यू शेयर कर रहे हैं. एंड इट इज एक्चुअली, दिस इज अ मिथ कि अगर आप होम अवे खेल रहे हो तो वो महंगा पड़ता है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशंस, होम एंड अवे आपको सस्ता यस पड़ता है एज यस अ यस, क्लब, बिकॉज मैंने देन और यू कैन हमदान ने एक्चुअली बैठ एक्चुअली. के की थी पीपीएल, जब हम ये अशफाक शाह वाली पीपीएल के बीच में थे, तो हमने कहा ये क्या बुला के, क्योंकि उधर बड़ा वो मसला चल रहा होता था ना इन टूर्नामेंट्स पे कि हम अब वहाँ मुस्लिम एफसी आई हुई है, वो रह रहे हैं महीने डेढ़ के लिए, रोज के पैसे लग रहे हैं, तो पीपल फॉरगेट के रनिंग एग्जैक्टली, कॉस्ट चल रही होती है आपकी. रनिंग कॉस्ट भी होती है, साथ देखिए एट द एंड ऑफ द प्लेयर्स भी इंसान है, यस. और आपने लीग को, आई जस्ट सजेस्ट दिस हाफ मंथ सीजन मैं मेंशन थी कि मे बी आप डबल राउंड रॉबिन का भी डबल करा के गिव देम 35 मैचेस, बिकॉज दैट्स द एस्पिरेशन. यू नीड टू गेट टू 9 मंथ्स ऑफ एक्टिव फुटबॉल, वरना वो मर्जी आपको आके कह दे, अगर प्लेयर्स 9 महीने, आई एम नॉट इवन अ टेक्निकल पर्सन, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एडमिट दैट, प्लेयर्स 9 महीने फुटबॉल नहीं खेल रहे, आप जो मर्जी करने, आपको फुटबॉल डेवलप नहीं होगा. आप उनको मौका दें, और 9 महीने फिर आप एक प्लेयर को मतलब दूसरे शहर में तो नहीं रख सकते, उस बेचारे की भी एक हम्म. जिंदगी है, मतलब आपने एक इसलिए जब मौका हम उसको गए हुए थे क्रिएट तो करिए मुस्लिम देन. एफसी और ये जो क्लब्स आए हुए थे, हुमा नहीं, बिकॉज हुमा आर बेस्ड इन इस्लामाबाद, वहाँ पे दूसरी लेग हो रही थी, बट इस्लामाबाद में मुस्लिम एफसी चमन वाले कह रहे थे कि हर दिन मैच करा दो भाई, गैप ही ना दो, हमने वापस जाना है. तो वो फिर ये वो मेंटालिटी आ एग्जैक्टली, जाती है. और दूसरा फिर वो यहाँ पे ये होता है ना कि आप इतना कंजेस्टेड फिक्सर स्केड्यूल चलते हैं, हम्म. सिंपल दुनिया का प्रोसेस है, यूल प्ले वन मैच पर वीक, एंड उसके अलावा यू आर एट होम. आपकी अगर टीम कराची में बेस्ड है, आप इस्लामाबाद में अपने मैच खेलना, आप थर्सडे को जाएं, फ्राइडे को पहुंचे, फ्राइडे को सेशन करें, सैटरडे को गेम है, गेम खेलने संडे को लेकर के यस. वापस आ जाएं, एंड इट्स अ लॉट मोर फीजिबल फॉर एवरीवन. एंड बिकॉज द क्लब्स आर देन फ्री टू चूज. अगर आप मुस्लिम एफसी, आप कहते हैं नहीं भाई वहां पे पैसे कम है, हम्म. हम सबकी फ्लाइट ही नहीं ले रहे, हम एक दिन एक्स्ट्रा निकल के वी गो बाय बस, वी गो हम्म. बाय ट्रेन, इट्स अप टू यस. यू द क्लब, राइट. आप एक साल का करोड़ रुपया खर्चना चाहते हैं या 5 करोड़ खर्चना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली विद इन यू. अब हम आगे जब जाते हैं ना, अब हम ब्रॉडकास्ट का रेवेन्यू भी लेके आ रहे हैं, ठीक है. फिर आपके पास आता है सेकंड, कमर्शियल रेवेन्यू. कमर्शियल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, एंड क्योंकि ब्रॉडकास्ट जो है उसमें ये 1.2 मिलियन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, हो सकता है ये कम हो सकता है आपकी नेगोशिएशन पे ये ज्यादा हो, स्पेशली कंसिडरिंग क्या क्या यहाँ पे अब 3 आपके पास वो आ गए हैं अच्छा, ब्रॉडकास्टर्स, और शाहरुख इसमें फिर भाई, आपका ओटीटी का ब्रॉडकास्ट कॉन्टेंट से भी है. का मेरे एक एक्चुअल, मैं भी इस बारे में बड़ा सोचता रहा हूँ कि जियो सुपर, ये जो सारे स्पोर्ट्स चैनल हैं, इनमें बैडमिंटन के सीनियर, मतलब के समझ रहे हैं कि सीनियर छोटे बच्चों के इवेंट्स आ रहे होते हैं, अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रही होगी और समथिंग. नो डिसरिस्पेक्ट अगेंस्ट बैडमिंटन, बट द पॉइंट इज कि अगर इस तरह की चीज़ें दिखाने को तैयार हैं, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, नेशनल चैलेंज कप, विमेंस चैंपियनशिप, ये कभी मैंने किसी टीवी चैनल पे नहीं देखी. इसकी क्या वजह है, अभी तक टीवी पे ये चीज़ें क्यों नहीं आई? आप जाके उल्टा सवाल पूछ रहे हैं ना, आप जाके कभी ये पूछें जो पहले पीएफएफ रन कर रहे थे, उन्होंने कभी जाके जियो सुपर से बात की थी. और दूसरा यही ये है मेरा कि सवाल मेरे है कि अपने हो क्या इंटरेक्शन रहा है. में बहुत सारे ब्रांड के, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एंड में ये कहा है कि यार इन लोगों के साथ काम नहीं हो सकता. देखिए, हम्म. प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, आप अननेसेसरी बातें करते हैं यहाँ पे, तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में तो फिर यहाँ पे ऐसे लोग कहानियां सुनी है कि स्पॉन्सर से जी अंडरनीथ पैसे निकालने की कोशिश कर रही है, करें, तो वो फिर जब बिजनेस प्रोफेशनल्स कम्युनिटी नहीं होते तो स्पूक फिर हो काम जाती नहीं है ना, दे वांट स्टेबिलिटी, दे होता. वांट हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी इन्फोर्स्ड, और एग्जैक्टली. वो सब कुछ चल रहा होता है. मैं नाम नहीं लूंगा, बट देयर वाज अ वेरी बिग ब्रांड दैट आई वर्कड विद इन पाकिस्तान, एंड दे वर विलिंग टू इन्वेस्ट अ वेरी साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी इन पाकिस्तानी फुटबॉल. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से उन्होंने नहीं की थी, उनको पीएसएल से डर लग गया था. बिकॉज लेकिन जब आप एक बड़े ब्रांड होते हैं, स्पेशली विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस इन प्लेस, आपकी सर्टेन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हम्म. हैं, एंड यू वांट टू वर्क विद प्रोफेशनल. वो नहीं करते लोग काम, फिर आपको अप्रोच जिस तरह करना है. अब आप, जब आप एक पिच डेक नहीं बना सकते, तो आप किसी को, क्योंकि आपने तो पिच डेक पे कन्विंस करना है ना किसी को जाके, अब उसको ये तो नहीं कहेंगे हम एक साथ सीजन देख रहे हैं, अगले साल हम्म. पैसे दे दीजिएगा. तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती, बट इनको चेंज करना बड़ा जरूरी है. तो ब्रॉडकास्ट में ओटीटी का ब्रॉडकास्ट भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, दराज होते हैं, वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस. अगेन ब्रांड्स को खैर मैंने उसमें डमी डाले में जस्ट टू
जस्ट टू सी। फिर आपके पास कमर्शियल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, क्योंकि इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट यू विल हैव पीपल एट स्टेडियम। पाकिस्तान का एक जो हमने स्वॉट एनालिसिस में भी गैप आइडेंटिफाई किया था, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा बहुत बड़ा मसला है एंटरटेनमेंट नहीं है। हम क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, जब आप वीकेंड पर बाहर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, या मैं जाता हूँ, खाना खा लो, कॉफी पी लो, चाय अच्छा पी घर लो, चले जाओगे। और इससे आवाम हमारे के पास लिए तफरी है, ऑप्शंस भी मॉल नहीं है चले एंटरटेनमेंट गए। के। अब तो सिनेमा हाउसेस आप जाके बने या हैं, मॉल चले गए, अब जाके सिनेमा हाउसेस बने, मतलब जब मैं थोड़ा रिलेटिवली जवान था तो वो भी नहीं थे। तो ये सारी जो मसले हैं ना, ये आप बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, और इसकी वजह से आपके पास बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो फुटबॉल मैचेस देखने जाएंगे। लेकिन जब तक आप उनको अगर आप एक 3 बजे वेनेसडे को मैच खेल दोगे, कोई नहीं देखने या आएगा। लेकिन अगर आप एक अप्रोप्रिएट टाइम सैटरडे, और आपके पास तो अगर 10 टीम है तो 5 तो आपके मैचेस यस। में होने हैं सिर्फ वीकेंड पे। आप 3 सैटरडे को कराएं, 2 संडे को कराएं, शाम को शुरू कराएं, और उसके एक गैप पे 7 खाताबुक बजे करें, इससे हो, ना एक people- 9 बजे हो, या 9:30, मतलब इस तरह आपका हाँ, साढ़े आराम छः से, नौ बजे, मतलब कुछ भी हो इट्स सकता है। नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। और वो तो एक वेन्यू पे भी नहीं है, हम्म। अभी यूफोन ने, आप सबसे अच्छी एग्जांपल, यूफोन ने जब अपना बलोचिस्तान कप, केपीके कप कराया, फाइनल में जाके देख रहे हैं क्वेटा के मैच, फाइनल में तो खैर लोग छत पे बैठ के यस। देख रहे थे ना, 5,000 रफली कैपेसिटी स्टेडियम। People want to see something. हमारा research with Nielsen was also saying the same thing, that people have never seen something like this before. It's like Steve Jobs saying that how can you ask the consumer when they have never seen something like this? आई हैव जब एक बंदे ने इंटरेस्टिंग कभी देखी नंबर्स नहीं आर है ऐसी चीज, तो आप कैसे उनका आई रिएक्शन हैव उनके ऊपर इंटरेस्टिंग यूं नंबर्स कर माई सकते सेल्फ। उमर, विमेंस चैंपियन वो कि कौन सी हाईएस्ट टीम थी, कितने नंबर्स थे उसके? 800 था। मैं आपको एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक बताता हूँ। ये जो एनसी के अभी टाइम पे एनसीसी जो नेशनल चैलेंज कप हुआ था, उसके अंदर कौन सी टीम थी, वापडा वर्सेस वापडा का किसी के साथ मैच था। और माई कूजो जो वेबसाइट थी, हालांकि वही आपकी बात सही है कि ब्रॉडकास्ट नहीं है, इट्स जस्ट वन कैमरा आगे पीछे उसको कर रहे हैं। उस पे सम आउटरेजियस अमाउंट, आई थिंक वो कह रहे हैं 800,000 या समथिंग जो है उसके व्यूज टोटल अभी तक आ चुके हैं। बिल्कुल मतलब क्रेजी नॉट नंबर्स। सरप्राइजिंग at all. And इसी तरह यूफोन का भी याद है, I was just looking at the at footballpakistan.com's number. I think there was like roughly 700, 800, 800,000 views cumulative जो उनके पास वो सारे कंटेंट से रिलेटेड थे। तो the audience is there. The problem is कि the audience ने कभी कोई चीज नहीं देखी। Then the other thing is marketing. आपने एक चीज को मार्केट करना बहुत जरूरी है ताकि घरों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। फिर जब आपके पास, हम इसी पे आते हैं, कमर्शियल रेवेन्यू यहाँ पे एक सब्सटेंशियल जनरेट होता है, और उसमें डिफरेंट स्पॉन्सर्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, टाइटल से लेके आपके पास अदर एसोसिएटेड स्पॉन्सर्स आते हैं, फिर बीच में आपके पास मैच बॉल का स्पॉन्सर आते हैं, बहुत सारी जगहों पे। अब यहाँ पे दिस इज द कमर्शियल स्ट्रेटजी, दिस इज समथिंग दैट आई एम मोर फेमिलियर विद। बहुत सारी जगहों पे आप इन काइंड सर्विसेज दिखा सकते हैं विद डिफरेंट ब्रांड्स। एक जो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें सजेशन दी थी कि लेट्स से इफ यू पार्टनर विद एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एयरलिफ्ट, आपका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का पाकिस्तान में मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, and QK you want that ease for fans to attend those matches. If you have that system in place where they are, let's say in a bigger city, 5, 10 drop points where airlift is working, and it takes you, आप आए, आप कराची के कोने में डीएचए में जाके गाड़ी पार्क करें, वो आपको वहां से उनकी बसेस रन कर रही हैं, they will just take you to the stadium and let you come back, ताकि ना रश लगेगा और आपके लिए आना जाना और बहुत मैं वो आसान जो होगा। आपने Just इंग्लैंड में as a देखा ही होगा, suggestion एक आपको दे। मैच गोइंग कल्चर, प्रॉपर एक अलग कल्चर है मैच गोइंग कल्चर। पहले वो बार में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे वो गाने शाने गाते हैं, बैठ के अपना एंजॉय मारते हैं, फिर वो सारे निकलते हैं लंबी लंबी वॉक्स पे एक साथ, या वो ट्रेनों पे आ रहे होते हैं, तो वो सारे इकट्ठा है। जब एक एसोसिएशन हो, एक फैन कल्चर हो, वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है अगर आप उसको देखें इन इट्स प्योर एसेंस। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैच देखने गया, मैंने यूनाइटेड सपोर्ट ऑफ 16 इयर्स पहली दफा देखने गया, एंड आई वाज ब्लोन अवे। बाकी सब कुछ तो रहता, 75,000 पीपल इन दैट स्टेडियम, और आना जाना ऐसे लग रहा था जैसे मतलब इट्स नॉर्मल रूटीन, ना कोई ब्लॉक ना कुछ और। वो खैर एक डिफरेंट दुनिया है, उससे पाकिस्तान का बड़ा कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छी चीज लगती है छोटे छोटे बच्चे 3, 3, 4, 4 साल के अपने पेरेंट्स के साथ मैच देखने जा रहे होते हैं, या अपने दादा के साथ मैच देखने जा रहे होते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल culture to watch, and it can only happen once. It takes time to develop something over the years, and this is what needs to be done. तो आपका commercial side of revenue भी आ जाता है।
match day is something very interesting. Normally, this is the responsibility of the clubs. What I propose in the model is that initially, maybe for the next 3 4 years, the PFF or the Pakistan Premier League can manage this on the behalf of the clubs, but all of this gets distributed back to the clubs. Whatever match day is being earned, the clubs get it back, just so it becomes easier for a lot of them to manage this. And match day, maybe ticketing hai. What I propose is this is a rather demand inelastic elastic type situation where you're not able to increase prices to a certain extent because the demand will start dropping down. So you keep the lowest price ticket at $1, maybe 200 rupees, so that it's very accessible and affordable. And considering the inflation in Pakistan, 200 mein, so I think you won't even be able to find a decent roll paratha anymore. So you take all of that, you get people involved, and then this is the real aspect of the Pakistan Premier League, that all of this revenue is cumulatively put together with the commercial broadcast adding to roughly $2.75 billion plus match day as well, and all of this then gets down and filtered to the clubs. Let's say कि 80% तो वैसे भी दे रहे थे, 20% अगर PPL को जाना है, they waive that off, and expenses जो लीग के लगने हैं वो अगर आप माइनस कर देते हैं, तो roughly speaking, I remember the calculation was about maybe 200 250,000 जो आपको शायद सेंट्रल पूल से एट द एंड ऑफ द डे मिल रहे हो. नाउ दिस इज हाउ द इकोसिस्टम बिकम सस्टेनेबल. आपका अगर मुस्लिम एफसी पहले सीजन में खेल रहा है, ठीक है, इमेजिन कि अगर उनको $250,000 मिल गए फॉर पार्टिसिपेशन इन द पाकिस्तान प्रीमियर लीग, that's a very sizable amount of money when you do that conversion, and that's probably more money than they have ever gotten for football. And this pot will only grow further जब आप 2 साल 3 साल 4 साल राइट साइकिल 3 साल का होता है, वो बढ़ता जाएगा, this pot will increase. But it also makes it feasible. अब हर club एक different approach ले सकता है. Let's say I'm a newly acquired team from Lahore. मेरे लिए तो 300,000 250,000 जो भी मेरे पास pool में से आ रहा है वो तो आ रहा है. But then I am free to manage my own commercial opportunities. And every club, if they're playing their cards right, PSL तो बहुत बड़ी चीज बन चुकी है. But 200,000 $250,000 commercially निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, especially when you have broadcast of every match, you have a home crowd everyone. ये बड़ी reasonable Hmm. figures की बात है. तो अगर घूम घुमा के एक solid club 400,000 या 450,000 revenue में टच कर रहा है, that means कि भाई उसके पास इतना पैसा है कि अगर वो लेट्स से फुल कैप पे भी जाता है $650,000, थोड़े से उससे ऊपर निकालते हैं, they know that the money is coming in, the model looks sustainable, and it will get sustainable as it gets along. And the ultimate idea that you sell for sustainability is कि once you have your own stadium, the ball game Yeah. changes. आप इनको पहले वर्कशॉप्स कराते हैं, हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी अ मल्टीपर्पस वेन्यू. आपको सिर्फ अपने मैच डे से पैसे नहीं कमाने, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं टू इंक्रीज एंड सप्लीमेंट योर रेवेन्यू. यू हैव कंट्रोल ओवर इट, और ये स्टेडियम राइट्स की भी अच्छी Yes. अपॉर्चुनिटी निकल सकती है. ऑल ऑफ दिस बिकम्स ए मॉडल दैट इज स्लोली सस्टेनेबल. एंड हर क्लब पाकिस्तान में जो खेल रहा है सेकंड डिवीजन में, उसका तो यही होगा ना कि भाई ऊपर चले गए तो देखें हमारे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे, हम Hmm. क्लब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर हर बंदे का मॉडल चेंज हो जाएगा. कुछ कहेगा अच्छा यार वी आर हैप्पी विद बीइंग फीडर क्लब्स, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, टैलेंट डेवलप करेंगे और उसको हम आगे जो है सेल करते जाएंगे. तो इस मुल्क में तो खैर अभी तक कोई ऐसा ट्रांसफर भी नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों के पास पैसा आएगा और प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्लेयर्स को अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, और उसमें जब 2 3 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बाय आउट क्लॉज डाला जाएगा कि भाई अगर आपने सदाम हुसैन को 3 साल बाद खरीदना तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, Hmm. और फिर कोई एक दिन आके कहेगा अच्छा यार ये प्लेयर बहुत अच्छा लग रहा है तो हमें खरीदना पड़ेगा. दैट मेक्स इट इनहेरेंटली सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोसिस्टम. और फिर ये होगा कि ये क्लब नीडलेसली स्पेंड नहीं कर रहे, इन क्लब्स के पास एक रेवेन्यू मॉडल भी मौजूद है. दुनिया में कोई भी क्लब प्रॉफिट के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता. नो क्लब Yeah. एग्जिस्ट solely to make a profit. Every big club that you can imagine, Barcelona is in debt of over $1 billion. Everybody loses money. It's about everyone's own objectives. कुछ लोग प्रमोशन के लिए काज करते हैं, कुछ लोग को शौक होता है, बट उनका मॉडल कुछ ना कुछ हद तक सस्टेनेबल होता है. एंड यू नो अगर ट्रांसफर सिस्टम बढ़ना शुरू होता है तो सब some clubs actually might be able to squeeze out a profit as well. But the model becomes sustainable and you aspire everyone के eventually what you want is के second division भी sort होगी, third division भी होगी, provincial leagues भी हैं. You can sell a dream कि अगर आप एक club start करते हो लाहौर में,
theoretically you could move up the divisions and go to the top tier. And this is how this models become sustainable, and then football flourishes. Commercial वो सारी opportunities होनी भी जरूरी है, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो Yeah. football नहीं develop होगा. But imagine a situation where 5 years down the lane that you are able to meet criteria for the AFC Champions League, but apart from that, at least 6 teams own football specific stadiums and have six residential academies to develop football. अब आप हब को इस इकोसिस्टम के हब को देखें, और उसके बाद देखें कि इसमें कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का, और इसमें सस्टेनेबिलिटी है. किसी भी दुनिया के और फुटबॉल मॉडल में तो खैर है ही नहीं. दिस इज द ओनली मॉडल दैट एवरीबॉडी फॉलोज. देयर इज अ रीजन फॉर दैट. दिस इज relatively sustainable. This is how football is developed, and this is how football is kept the priority with all the other things that come along with it. Yeah, absolutely. Just to clarify, वो जो total viewership थी वो थी around 800,000 माई कूजो पे. एंड मज़ेदार बात यह है, just to like give you some numbers, के women's championship पे top match जो था वो 25K पे गया था on माई कूजो, which is a niche streaming site, and these are huge numbers. और to put that into context, Pakistan versus Cambodia was 130K. पाकिस्तान की नेशनल टीम 130K कर रही है और विमेंस चैम्पियनशिप क्रॉस 25K. तो दैट्स और ये सब उस टाइम पे हुआ है जब पहली विमेंस चैम्पियनशिप, और पहली या दूसरी जो है वो रेगुलरली होना शुरू हुई. आई थिंक द फर्स्ट वन वाज डन बाय हमजा खान, उसके बाद ये हुई. एंड द मार्केटिंग दैट वाज डन बाय PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी, उसकी वजह से थोड़ी आपको एसोसिएशन और थोड़ी ऑडियंस वगैरह नज़र आना शुरू हुई थी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट शाहरुख भाई, जस्ट वन मेजर क्वेश्चन आफ्टर दिस ह्यूज, लाइक आप कहेंगे कि बहुत ही डिटेल्ड प्लान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मेरे जैसा बंदा अगर कोई हो जो बहुत ही पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर इन्वेस्टेड हो, तो वो इस प्लान के की वजह से ही एक्साइट हो जाता है. लेकिन फिर आई एम ब्रॉट बैक टू अर्थ बाय दिस वन सिंपल क्वेश्चन, विच इज़ हाउ रियलिस्टिक और हाउ पॉसिबल इज दिस. This is the most नहीं 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 realistic नहीं plan that you have वो to. मैं उस एंगल से नहीं कर रहा कि ये प्रोसेस, ये अच्छा, वो आप बोल रहे हैं कि एक्चुअली होगा कि नहीं एक्चुअली होगा. पाकिस्तान में कितना रियलिस्टिक है ये सवाल का है. वो नहीं कि हो किस तरह नॉर्मली हो सकता है, वो तो हमें पता है हर जगह होता है. पाकिस्तान में हो सकता है कि नहीं? देखिए, पाकिस्तान में तो अगर आपने फुटबॉल लीग अपनी चलानी है, ये सबसे आसान तरीका है. इससे ज्यादा आसान कोई तरीका आपके पास मौजूद है, राइट. दूसरी चीज ये है कि आपको इसके लिए थोड़ी सी विल पावर चाहिए, और थोड़ा इससे रेलेवेंट लोग चाहिए. वो भी आपको मिल जाएंगे, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, लोग क्या चीज है. तो थोड़ी सी अगर आप एफर्ट करेंगे तो ये चीज हो सकती है. ऑल यू नीड इज पॉलिटिकल विल. इसमें ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. PFF में भी देखना, नॉर्मलाइजेशन कमेटी तो मौजूद है, बट रियलिस्टिकली इस तरह का जो बहुत बड़ा ओवरऑल है, तो वो तो एक सर्टेन टाइम पीरियड पे है. तो जो पावर में आते हैं उनका अपना पर्सपेक्टिव क्या है लीग के बारे में. अगर तो हमने पाकिस्तान प्रीमियर लीग को इसी हाल में छोड़ दिया, वो तो अगले 100 साल भी आप छोड़ दें तो वो ऐसी ही देखें, रहेगी. ना अगर उसमें अगर प्लेयर लोग डेवलप होंगे. वही आए तो हरकतें भी वही होंगी. तो डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट? दैट्स अ प्रॉब्लम. देखिए, आई डू एक्सपेक्ट सर्टन डिफरेंसेस. अभी मैंने आज भी डॉन में एक आर्टिकल लिखा था इस चीज के बारे में, अगले साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आई डू एक्सपेक्ट सर्टन चेंजेस, और ये अगले कुछ महीने बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट हैव हैपेंड ओवर द लास्ट ईयर. फीफा का रिएक्शन क्या होगा, किस तरह की सिचुएशन जाती है, वो इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन, जिसमें पता चलेगा क्या होता है. बट ये मॉडल अगर आप दुनिया में किसी के पास भी जाएंगे, किसी की भी लीग एनालाइज करेंगे, दिस इज द ओनली या मॉडल दैट्स प्रेजेंट, दैट्स सस्टेनेबल. एंड मैं इस पे थोड़ा सा एक दो एंगल्स वापस आता हूँ कि इसमें एक और जो हमने मजे की चीज, ऑब्वियसली मार्केटिंग कैंपेन बिल्ड की थी, बिकॉज़ आई वाज द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट इटसेल्फ. बट इसमें अगर आप देखें कि जो $300,000 आपने एक टीम से लिए ना, वो 6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट्स ऑलमोस्ट $1.8 million आपके रिजर्व में पड़े हैं. इसमें हमने एक और इंटरेस्टिंग सजेशन दी थी कि अगर आप एक PPL, मतलब आपकी की फाउंडेशन बनाते हैं, जिसका एम जो है ऑब्वियसली अपलिफ्टिंग फुटबॉल और डेवलपिंग फुटबॉल है, विद दिस 1.8 मिलियन, और साथ साथ आपके पास इन लॉन्गर रन और भी रेवेन्यू आएगा. आप एक सर्टेन टाइम पीरियड में 1-2 साल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं. लेट्स से कि आप चित्राल में, and वो बहुत बड़ा ना हो, आप एक पिच बना दें, आर्टिफिशियल पिच बना दें, उसमें लाइट्स लगवा दें, डिसेंट वो बना दें, जो शायद अगर आप करने पे आए तो $150,000 to $200,000 में भी हो जाएगा. बट आप ये एग्जीक्यूट करते हैं इन सर्टेन
एरियाज ऑफ द कंट्री जहाँ पे मैसिव मैसिव फुटबॉल फॉलोइंग है, जैसे चित्राल हो गया, जीबी हो गया, बलोचिस्तान के कुछ एरियाज हो गए, इनको अगर आप एक ग्राउंड दे देना, तब्दीली वहां से शुरू हम्म। होती है। इस्लामाबाद में भी एक ग्राउंड बना था F6 में 2007 में, एंड दैट हैज चेंज द फुटबॉलिंग लैंडस्केप। लाहौर में है ही नहीं इस्लामाबाद कोई काम का फुटबॉल इज ग्राउंड 11 साइड का। पंजाब एग्जैक्टली स्टेडियम की कोई हालत इस्लामाबाद नहीं है। में बिल्कुल स्टेडियम तो बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पे तो छोटी पिचेस बनी थी, उसकी वजह से फुटबॉल नंबर वन स्पोर्ट बन गया। आपके पास इस वक्त, अगर मेरी काउंट हर वक्त चेंज होती रहती है, आई थिंक अब इस्लामाबाद में तकरीबन 20 एस्ट्रोटर्फ पिचेस हो गई हैं, और पूरे शायद मुल्क में इतनी एस्ट्रोटर्फ पिचेस हाँ, हैं जितनी एक शहर के इस्लामाबाद पास इज है। फेमस फॉर और दैट। इंटरेस्टिंगली सारी प्राइवेटली ओन्ड है, कोई गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारी यस। प्राइवेटली ओन्ड एक बिजनेस मॉडल के तहत चल रही है। पर एक ग्राउंड से वो सारी रेवोल्यूशन आई, और इस्लामाबाद में तो आई डोंट नो एनीवन इन माय सर्कल जो रिलीजियसली क्रिकेट खेलता हो, सारे रिलीजियसली फुटबॉल खेलते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है टू रीच आउट टू अदर एरियाज और उसको डेवलप करने का। आखिरी में मेरी तरफ से जो पॉइंट मैं आऊंगा, मैं आईएसएल को, जो मैंने शुरू में आपको कहा था, इंडियन सुपर लीग में एवरीबडी, सबको बहुत शौक है हवाला देने का कि भाई उधर देखें इंडिया में हो गया ये। आईएसएल का मॉडल आप अंडरस्टैंड करें, आईएसएल चार्जेस ए फ्रेंचाइज फीस टू एवरी ओनर, एंड वहां पे वन ऑफ द बिगेस्ट blunders I'd say that the AIFF made was they sold the rights to IMG Reliance for 15 years, almost like a blank contract, बहुत सारे पैसे मिले, बट अब आईएफएफ को रिलायंस से इजाजत लेनी पड़ती है कुछ करने के लिए। तो हम्म। इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फुटबॉल इन सेंस। लीग का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो द अमाउंट ऑफ फ्रैंचाइज फीस दे आर चार्जिंग इट वेरीज अ बिट, बट 12-13 इंडियन करोड़ रुपीस व्हिच इज ऑलमोस्ट 1.2 1.3 मिलियन डॉलर्स, वो एक फ्रैंचाइज फीस हर साल दे। उसके साथ साथ जो उनको सेंट्रल पूल से मिल रहा है वो भी 1.2 1.3 तक ही आता है। तो बेसिकली विद व्हाट इज गोइंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट, वो जीरो पे खड़े होते हैं। Because Star Sports is an owner of the league, they don't share any broadcast revenue with the या clubs, which has to be the highest revenue area. और आईएसएल की जो अपनी एस्टिमेट्स हैं उसमें स्टार स्पोर्ट्स इज रफली गोइंग टू 200 मिलियन, 2 अरब रुपया वो एड्स के थ्रू कमा रहे होते हैं उसके थ्रू, एंड नन ऑफ दैट गेट्स फिल्टर्ड डाउन टू द क्लब्स। तीसरी चीज ये है कि जब आप उसको इस तरह का मॉडल बना लेते हैं, द क्लब्स आर्ट फाइनेंशियली स्टेबल। आपके पास दिल्ली डायनामोस पुल्ड इट आउट, वेंट टू ओडिशा, पुणे क्या कहते हैं, वाउंड अप। और उसमें आप सबसे मजे का मॉडल देखें कि द मोस्ट प्रोफेशनली रन क्लब इन इंडिया एंड साउथ एशिया इज बेंगलुरु एफसी बाय अ कंट्री माइल। एंड दिस दे आर competing in a league जहाँ पे मोहन बगान है, हम्म। जहाँ पे ईस्ट बंगाल है, क्लब्स with 120, 130 years of history. Mohan Bagan was the first team that या beat an British regiment in 1911. So a lot of history there. और उनकी फैन बेस में कलकत्ता में जब भी डाबी होती है तो 100,000 फैंस ज्यादा आते हैं। But the highest revenue in the ISL is with Bengaluru FC, roughly 65 Indian crore rupees. And इन लोगों ने कभी मार्केट प्लेयर साइन नहीं किया, इन लोगों ने कभी अननेसेसरी फ्लफ मार्केटिंग नहीं की। दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विद द फैंस। साइज में शायद वो ना बढ़े, बट अगर आप जाके वेस्ट ब्लॉक ब्लूज देखें, 200-200 फुट के तो टीफोस उठा के लेके आते हैं स्टेज में, मैचेस में। Why is that? Because they focused on the basics. They got that emotional attachment to the community, and you can see that with the revenue. If you do everything right, रेवेन्यू भी आया। दे द ओनली टीम जो आईएसएल, आई लीग, फिर एएफसी कप के भी फाइनल में पहुंचना, इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एनी क्लब। तो उनका जब ये सारा कुछ करने के बाद, जब when पार्थ जिंदाल who's the owner of बेंगलुरु एफसी, जब वो नीता अंबानी को ये लिख के भेज सकता लेटर में, मॉडल इज नॉट सस्टेनेबल, वी आर बर्निंग 20 to 25 इंडियन करोड़ रुपीस एवरी ईयर, दिस इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। वाह। franchise league is not sustainable for India. It's not sustainable for Pakistan. और उसका प्रॉब्लम ये है कि अभी इतने 8 साल तक गुजर गए, 4 साल बाद भी अब तो आईएसएल को करना पड़ेगा। अगर वो नहीं चेंज करते फिर इन्वेस्टर फटीग होंगे, व्हाई आर वी डूइंग दिस व्हेन यू डोंट केयर अबाउट फुटबॉल इन द फर्स्ट। तो इसलिए franchise league is not feasible. You need to have a league, you need to have private owners, because you need people to invest into infrastructure, you need people to invest into teams, but it does not mean that you don't make the model sustainable for everyone involved. या शाहरुख भाई, ये एक आखिरी बात यही करूँगा कि मेरी तरफ से तो पूरे नंबर हैं, लेकिन आपको उधर कोई मसला, आई एम प्रीटी श्योर यू मस्ट हैव पास विद फ्लाइंग कलर्स, जो आपने एक्चुअल प्रेजेंटेशन दी है। अभी रिजल्ट आएगा ऐसा देखते
लेकिन मैं उनको ये भी दिखा दीजिएगा, सभी उनको कहीं ये एकेडमिक, देखिए एक्स्ट्रा मवाद भी मैंने इसको और आपको डिटेल दे दिए। मैं इसको मजे की आपको चीज बताता हूँ, हमारी प्रेजेंटेशन 20 मिनट्स की थी, आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था, मतलब 20 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद, एंड घूम घुमा के, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमारे पास 15 लोग हैं इन आर क्लास फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, सब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। एक सवाल था, यार ये पाकिस्तान में आज तक क्यों नहीं सीखे? ये मसला क्या है? उनको फिर हम क्या बताएं, उनको पाकिस्तान ले ही आते हैं, उनको दिखा मैं भी देते हैं, यही आप फिर जवाब अपनी दूंगा, मैंने स्टोरियां कहा आपको सुना क्या, दें। आपने तो जो परेशानियां आपसे भी सुना। मैं स्टोरियां सुन के परेशान हो जाता हूँ, वो अब बंदा क्या ही बोले। बट या दिस हैज़ बिन एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड एज अ पाकिस्तानी फुटबॉल फैन आई एम श्योर आई speak for everyone who is an admirer of Pakistani football, a fan of Pakistani football, के we hope कि जल्दी से जल्दी हमारी लाइक ये हो हमारी लीग के साथ, हमारे PFF इसको रिवैम्प करे, PPL को, इस तरह हम इस तरह फुटबॉल को देखें डेवलप होते हुए, बिकॉज दिस इज़ द वे टू गो। एंड आई होप यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, यू पीपल लाइक यू are there to take us forward from a sports management and marketing perspective, because वही ecosystem की जो हमने पहले बात की थी, we need all sorts of people, coaches, referees, players, कॉरपोरेट जो एंटिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, हर चीज़ मिल के, मीडिया, हर चीज़ मिल के एक फुटबॉल इकोसिस्टम बनता है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग ब्लॉक होती है। थैंक यू सो मच शाहरुख भाई। एनी फाइनल थॉट्स, एनी कंक्लूजन्स दैट यू वांट टू गिव इन दिस एपिसोड? नहीं, बस यही है कि जिस तरह आपने बात किया कि दिस इज नॉट अ वन मैन प्रोजेक्ट, आई एम वन इंडिविजुअल, बट इसमें बहुत सारे लोग डिफरेंट रोल हैं, कोचेस का अपना रोल है, प्लेयर्स का अपना रोल है, मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनका अपना रोल है, एंड considering how badly we've been affected over the last 7 years, I think it's high time that the community gets together, and something like this, if it's done well, if it's done in its truest sense, football will flourish karega, and you will give a chance for a lot of different individuals from all sorts of backgrounds to be involved with professional football. And if this is done right, in the next couple of years, you will see a sizable change in Pakistani football. Yeah, inshallah, and I hope that the people watching this 3 or 4 years from now, people can look back in this and say कि हाँ, ये जो ये बातें कर रहे थे वो अब हमारे सामने हो रहा है. I hope that's the case one day, and one day very soon. It's been an absolute honor and privilege talking to Shahrukh Sohail, who's just gone through a fantastic bit of content too, in terms of how the Pakistan Premier League can be reimagined, and very realistically so. I hope you've enjoyed it. This has been Ismail Farouk. Pressing Matters. Add on the mic. Do subscribe. Follow us on social media, and take it easy.